DSM 아부 등심의 머타시미야 허다 더파니 디프라석니 만타이 석다이 산마니 저바 응톤 더파 정절로 클라이작 응톤 저라 특이노 더파니 바의 시간고 파이 저바 클라이통고 코랑 디샤오이통고 어랑적 디프라하 코랑 샤라 짜치브리 부바그라 포성니하 피아바 저라바이 박샤 부바그라 몰 저라 에바 라스몰 그마머니 올로 루쿠정 라이드니 라모보 파이마니 올로 부바그라 저러니 몽 힌디 마리 힌디 저도 드륵드륵 스그마사카 팔링니 크요클라이 어버리버기노 하스테와 하방 자랑나이 에바 political party로노 억슈자모보 녹삭라요 어버하이저로 하이노하이 오랑작 하니 라이브마노 스그마나 나이마니 망프리 카세페가 보바크라 컬 아브로디 호텔 폴로 카나오토마 에바 그잠 라스본 에바 부스바본도 벨레조 하스테 하방 그잠 라스바본 에바 부스바본도 벨레스노 파이브스타र 호텔 사람들이 버기 다스 호텔로 바르자리자 벨레스노 슈바이 카탈케 파이브스타र 호텔 사람들이 당기 동마노 샤이마니 카드봉 푸노기 야프리 레이카 DSF 런스랑나이 모타 koktumatrin biskango DSF ni bakti jiprani laibama shigumana ngaibani chamongno kebengi kasui tapa boksaka khainedi आज हम लोग बीएसएफ की तरफ से जो पुष्पबांडा पैलेस है बिल बाय द महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य in the year 1970 till date in the year 2018 it was राज भवन। हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला है and we got to know the culture and museum has been handed over to the Taj Group to establish a hotel। ये सिर्फ हम लोग यही चाहते हैं कि we want development in the state, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन जो त्रिपुरा का हिस्ट्री को डेमोलिश कर कर, त्रिपुरा की कल्चर हिस्ट्री को वेनिश कर कर हम लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते। हम लोग गवर्नमेंट को यही क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि यू कैन मेक डेवलपमेंट इन द स्टेट, वी आर नॉट अगेंस्ट इट, गिव देम ए प्लेस लाइक पोलो टावर इन अनदर प्लेस। लेकिन क्यों जो राजा उसका महल को बना के गया, हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके 50-50 करके डेवलपमेंट करने जा रहा है। वी वांट टू अपील द पब्लिक, आप लोग ये जानना जरूरी है जो हिस्ट्री है। आप लोग देखते हैं बाहर में भी ताजमहल, रेड फोर्ट, ये लोग भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन त्रिपुरा में क्यों बार बार ये हो रहा है कि जो हिस्ट्री को डेमोलिश करके दूसरा बाहर के आने वाले को हैंड ओवर कर रहे हैं ताज ग्रुप को। वी वांट डेवलपमेंट बट विदाउट डिस्ट्रक्शन of the history and culture of the Tripura. There will be very clear message from our side. What is the allegation? The allegation is the Tripura government has handed over the Pushpabanda Palace to the Taj Group to develop a hotel, and we got to know that not only hotel but they are dividing into two parts. One is the museum and the Taj Group. But one question remains: if this history place is handed over to the Taj Group, will any public will able to go and visit the history place? There is a question. The public should know this. The government should understand the sentiment of the people and history. The history should be respected. We are not against any government, but if this thing has been done by the government, we will definitely, we TSF will stand against it.